My name is Nikhil. This video we are shooting to help you in filling up the form for IIM Rohtak IPM application form 2022. Yes guys, अभी इंडिया में जितने भी IIMs हैं, out of those IIMs 5 IIMs ऐसे हैं जो कि 5 years integrated program offer करते हैं. So I'll be telling you about IIM Rohtak. इसके अलावा कौन कौन से IIMs हैं जो कि ऑफर करते हैं 5 years integrated program. That is IIM इंदौर is common one, we already know. IIM इंदौर सबसे पुराना IIM है जो कि 5 years integrated program ऑफर करता है. उसके बाद IIM रोहतक was launched for 5 years integrated program, and after that IIM रांची, IIM जम्मू and IIM बोध गया. इन IIMs ने भी अपने 5 years integrated program को लॉन्च कर दिया. तो एज ऑफ नाउ वी हैव 5 years integrated program जहाँ पर स्टूडेंट्स को MBA के टाइम पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता to give the another entrance test and to give the CAT exam, GMAT, SNAP, other different entrance tests to apply for the MBA. So यहाँ पर one shot के अंदर if you are able to get into these IIMs, you don't have to give the entrance test for the MBA. आप directly 5 years के लिए ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप वहाँ से पास आउट होंगे. सो इट्स अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट बाद का आपका जो स्ट्रगल होता है टू अप्लाई फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड दोज थिंग्स वो आपका सारा खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, अलॉन्ग विद दीज IIMs कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ऑफर करती हैं 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. लाइक वी हैव UPS देहरादून, OP जिंदल एंड ऑल. We have one more GD Goenka. Along with that, few more universities there, like Nirma University also offers 5 years integrated programs. These are the other options we have for 5 years integrated program. Those who actually want to give it a shot and एक ही बार में पूरा का पूरा 5 years integrated ले जाना चाहते हैं, तो these are the options available for you guys. Alright, so इस वीडियो में what we're gonna do, we'll talk about IIM रोहतक, उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे फिल करते हैं, उसका बारे में थोड़ा जानेंगे, उसका प्रोसेस उसका देखेंगे कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ऑलराइट, सो ये हमारा पैटर्न है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स वी हैव 160 सीट्स इन IIM रोहतक. द टेस्ट मोड विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बेस्ड टेस्ट होता है. IPM प्रोग्राम इसको टेस्ट को कहते हैं. एंड अगर मैं उसके पैटर्न की बात करूँ, द पैटर्न इज द पैटर्न विल हैव 3 सेक्शंस: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एप्टीट्यूड. ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे. सो इन टोटल 120 क्वेश्चंस फॉर ऑल दीज सेक्शंस, +4 फॉर द पॉजिटिव आंसर, -1 फॉर द नेगेटिव आंसर. इन टोटल 120 क्वेश्चंस हैं. एंड मैक्सिमम मार्क्स अगर होंगे तो दैट विल बी 480, बिकॉज वंस यू मल्टीप्लाई 120 into 4, so that maximum marks someone can get, that is 480 marks out of 480, that is the 100% marks. All right, so the question exam pattern is MCQ. You have choices, जिसमें नॉर्मल हम लोग MCQs फॉलो MCQs होते हैं, उस तरीके से आप उसको ऑप्शंस होंगे, आपको राइट आंसर पे चूज करना है. Alright, let's talk about other information. Eligibility criteria: 60% students should have in 10th standard. 12th के अंदर भी आपको 10th and 12th के अंदर भी आपको 60% मिनिमम होना चाहिए. Maximum age to apply for it, that is 20 years of age as on 30th June 2022. For SC, ST, PWD category, minimum percentage is 55% in 10th and 12th, and 20 years की age maximum के लिए apply कर सकते हैं on the same date which I have given, June 30th 2022. Alright, now selection process क्या है इस particular IIM रोहतक में जाने के लिए? They'll be conducting an IPM test. The IPM test पहले aptitude test होगा आपका, उसके basis पर you'll get a score, and then they'll be consider other things also, like once you give the entrance test you'll be having the personal interview, and then they will also be considering your past academic things. So अगर हम overall weightage की बात करें तो weightage में जो aptitude test है IIM रोहतक का, that will be 45% ओवरऑल वेटेज का. एंड पर्सनल इंटरव्यू को दिल बी गिविंग द वेटेज ऑफ 15%. आपका 40% विल बी 10th एंड 12th. सो अगर आपका 10th एंड 12th को कंसिडर कर रहे हैं तो 10th का भी 20% वेटेज है एंड 12th का भी 20% वेटेज है. सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जो एक्चुअली IIM रोहतक फॉलो करता है फॉर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्टेड ऑन 21st February 2022. लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज 2nd May 2022. सो वी हैव टाइम टू फिल अप द फॉर्म, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि जैसे ही कोई फॉर्म निकलता है आप उसको टाइम पे फिल कीजिए, सो दैट यू डोंट डिले दैट फॉर्म्स. ऑलराइट, एंड एग्जाम डेट इज May 21st 2022, 3 PM to 5 PM. So 2 hours examinations, exam test होगा, and ये पर्टिकुलर एग्जाम डेट
mentioned here. Now I have also given the application fees. The fees for applying the for this IIM Rohtak is 3890 3,890 rupees. I have given the direct link to access it. Once I click on this particular link, it will take me to the main registration page of IIM Indore. Okay, there's the main registration page. I will have to punch in my name on the left hand side, my date of birth, my email ID. I will have to confirm the email ID same. Will have to choose the nationality, my country of residence, mobile number, and I will have to confirm the same mobile number on the right hand side. So क्या होता है कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बार बार इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं बिकॉज समटाइम्स अगर कोई ऐसी मिस्टेक जो होती है, अगर आपने ईमेल आईडी गलत दे दिया एंड मोबाइल नंबर गलत दे दिया, तो they might not be able to contact you whenever they you get selected in the universities. So इसीलिए यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं कंफर्मेशन के लिए, they ask you to put it twice so that you actually give it do it this way. Okay, so once you do that, it will give you this particular option. ये एक declaration है, you'll have to see this declaration. If you have the captcha here on the right hand side, you will click on I agree and you will click on register. Once you register, you will get this particular thing where you have the application number and you will get a mail from IIM Rohtak with the username and password. Also you'll get the message as well, so आपको वो भी आपको मिल जाएगा. Please save your username password somewhere because you'll be using it for the filling up for downloading the admit card. जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, you will have to get that admit card along with you. ठीक है, सो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू रीजनरेट द पासवर्ड एंड ऑल. तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक एरिया होता है. सो इसको आप प्लीज़ कहीं ना कहीं सेव कीजिए. फॉर प्रथम स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया है, दिस समथिंग कॉल्ड फॉर्म्स वॉलेट इन द प्रथम अकाउंट, जिसमें स्टूडेंट्स अपने यूज़र नेम पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सेव कर सकते हैं and they can use it whenever they require it. So you have the log of your username password in the Pratham portal itself, so that अगर use जब भी आए आप उसको fetch करके details दे सकते हैं. All right. Now I have fill in this information. You will get this particular page. On the right hand side, you will have an option called go to application form. So once you click on this particular thing, you will get this registration page. So now I have already mentioned those basic information. Now I will have to mention the father name, mother name. I will have to mention the gender, category, and these information I have to punch in. Now below that, country and email ID is already given. A mobile number and email ID is already given. I don't have to make any changes there. Disability, yes or no. This is important, guys. If you are, if you fall under any disability category or something, you should have a certificate along with it because you'll be attaching the document for it. Okay, that is very very important. Okay, so you will have to mention the address below that, address with the state, city, pin code number, and district too. So these information I have to punch in. Below that, अगर आपका permanent address same है तो आप उस पर yes कर दीजिए, अगर अलग है तो you can change it later on. Okay, now next window अगर आप submit करेंगे तो you'll get this particular option where you'll have to punch in the information for 10th standard. So you will have to punch in the percentage you have got in 10th standard. Then you have this board selections, which board you're from. You have to mention the school name and the year of completion. So अगर आप अभी इस साल entrance देने वाले हैं, so if there's no gap year in between, so आपका year of completion for 10th will be 2020. All right, so I've already selected that. Marks obtained, एंड आपको इसके नीचे आपको पूरे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास थे 10th स्टैंडर्ड में. सो आई हैव मेंशनड इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल. दीज वर द सब्जेक्ट्स व्हिच आई हैड मैक्सिमम द मार्क्स आई ऑब्टेन्ड out of the maximum marks. So 100 में से marks था तो I have chosen 100 on the right hand side. On the left hand side I have mentioned कि कितने मेरे marks आए. So you don't have to punch the information on the below this particular section. ये automatically calculate करके आपका percentage निकाल लेगा और बाकी चीज़ भी mention कर देगा. Alright, once you do that, 10th की information के बाद you will punch in the information for 12th. Okay, so now have you completed 10th certificate, 10th 12th or not? So I have selected no. Course type diploma है या 12th completion है. I mentioned 12th. Board selection is there and the college the school name is also there. All right, so these information are there. You will have to click on save and next. Guys, this is very very important. इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. Whenever you punch in this information, आप इसमें yes, अगर आप 12th पास आउट नहीं किया है आपने तो आप इसको
नो ही करेंगे, आप उसको यस नहीं करेंगे टिल द टाइम यू हैव गॉट द फाइनल मार्क्स, यू विल क्लिक ऑन नो option on the left hand side. All right, once you click on save and next, it will give you this particular page. Now there are three preferences कि मैं कहाँ पर entrance test देना चाहता हूँ. Okay, so supposingly I am from Delhi, तो दिल्ली में मैं हूँ, तो आई हैव गिवन माय फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ दिल्ली सिटी, सेकेंडली आई हैव गिवन गुड़गांव सिटी, एंड थर्ड आई हैव गिवन द नोएडा सिटी. सो दीज आर द प्रेफरेंसेस व्हिच आई हैव गिवन. व्हेन एवर यू गिव योर प्रेफरेंस सिटी, प्लीज मेक श्योर जो आपके नियरेस्ट सिटीज़ हैं उसी का ही आप प्रेफरेंस दीजिए, ज़्यादा दूर का मत दीजिए, बिकॉज यू माइट नॉट बी एबल टू रीच देयर और नॉट देयर. सो डोंट गेट इनटू दैट सिचुएशन कि आपको प्रॉब्लम हो. ओके, जो नियरेस्ट जो आपके लोकेशन सिटीज़ हैं आप उसी पे ही आप मेंशन कीजिए. ऑलराइट, so I have mentioned that. I will click on save and next. So I will have to attach three things here. Okay, so one is this photograph and the signature, 10th certificate and 12th mark sheet. It is very important, please note. यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको guys. पहले में हम photograph and signature को attach करके देखते हैं. I will click on click here and I have attached a photograph here, and photograph attach हो गई है. The maximum size they want is 80 KB and JPEG and JPG format is required here. So आप photograph को यहाँ पर attach कर सकते हैं. If in case you face any problem in compressing the photograph, it is very easy. आप Google पे जाकर आप को टाइप कीजिए compress image and automatically size photograph size वो decrease कर देते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कोई भी अपलोड करके अगर आप compress करेंगे, it will automatically decrease the size of the photograph. एंड अगर कोई आपका कोई और फॉर्मेट में अगर आपके पास फोटोग्राफ है, पीएनजी है मे बी फॉर्मेट, तो आप उसको भी जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं. गो ऑन गूगल टाइप पीएनजी टू जेपीजी फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग गूगल. ओके, सो नॉट डिफिकल्ट टास्क टू डू इट. फोटोग्राफ करने के बाद आई विल क्लिक ऑन सिग्नेचर, एंड मुझे सिग्नेचर को भी अटैच करना होगा. देन दिस पर्टिकुलर पार्ट विल गो ऑफ. ओके, वंस आई डू दैट आई विल क्लिक ऑन close. Once I click on close, it will do it, and then below that I will have to mention the 10th certificate attached. तो 10th सर्टिफिकेट मुझे अटैच करना होगा. गाइस 10th एंड 12th के लिए मुझे एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आपको. जब भी आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 10th का सर्टिफिकेट डायरेक्टली अटैच मत कीजिए. 10th के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट ले लीजिए, उसमें आपको एक सेल्फ अटेस्ट करना है, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू अटेस्ट बाय नोटरी एज वेल. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्ड है मेंशन, दैट मीन्स आपको नोटरी से भी आपको करवाना है. सो नोटरी आर अवेलेबल एवरीवेयर. सो आप नोटरी के पास जाइए, उनको बोल दीजिए कि आपका टेस्ट करवाना है. सो दे विल डू इट. ओके, सो दैट मीन्स उसमें दो चीज़ें टेस्ट होंगी. एक आपका सेल्फ अटेस्ट होगा, व्हेन यू गिव सिग्नेचर कर दोगे आप उस पर, एंड नोटरी से भी आप नोटरी पे भी आप उसका सिग्नेचर करवाओगे. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर 10th and this is for 12th. So once you if you have not completed 12th standard, you guys can see कि यहाँ पर स्टार मार्क्ड है. ओके, तो ये लास्ट में भी आपको डिस्क्लेमर देगा व्हेन यू एक्चुअली सबमिटेड. इट विल गिव यू द डिस्क्लेमर कि आपने 12th का सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है. सो उसको भी अगर आप ओके कर दोगे तो इट विल बाईपास दैट. ओके, स्टार मार्क्ड है फॉर 12th स्टैंडर्ड, बट इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट विंडो. ओके, सो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास 12th का आपका नहीं है तो यू वोंट गेट, यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर. ओके, सो वो बाईपास हो जाता है ऑटोमेटिकली. आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई कुड डू इट. तो नाउ द थिंग इज दे माइट द IIM रोहतक माइट डू द चेंजेस फर्दर. मे बी हो सकता है वो स्टार मार्क बाद में हट जाए, बट एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियो, एज ऑफ नाउ स्टार मार्क इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो बाईपास हो जाता है. It's not difficult task, and once you do that it will give you this particular option. As I've already mentioned, the fees will be 3,890 rupees. You will have to click on the declaration, you have to read this information, and you have to click on this option. On the right hand side you will have to click on I agree, and below that you have the captcha. Here you have to punch in the same captcha, and you will click on submit options. So once you click on submit, this is the payment gateway you will get. These mobile number, email ID, payment name, that is optional. You don't have to write it. It's not compulsory to write it. So you just have to click on proceed now. These are the payment options. Cash options there, check, RTGS, net banking, debit, credit card, UPI. Lot of options. Almost all the options are available for the payments. So you can make the payment using these things. You will click on proceed now, and your work is done. So once you do that, your form is done. You don't have to do anything else, and
This is actually how you fill up the form for IIM Rohtak. Still, you might face problem in filling up the form, or maybe कोई attachment में problem आ जाती है, तो you can contact us on the mobile numbers given at the left hand side. आप हमको contact कर लीजिए from 10 to 7. We will more than happy to help you in filling up the forms. Okay. Students, those who are not a part of प्रथम टेस्ट प्रेप, आप भी इन यूट्यूब वीडियोस को देखकर फिल कीजिए, बिकॉज क्या होता है कि बाद में ना यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। व्हेन यू एक्चुअली डू कोई गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू गेट फेस प्रॉब्लम इन कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटी टू गेट दी करेक्शन डन। सो फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखिए, दीज वीडियोस आर अपलोडेड इन द प्रथम अकाउंट ऑफ द प्रथम स्टूडेंट्स। ऑल्सो दीज वीडियोस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द यूट्यूब चैनल। सो रेफर टू द फ्रेंड्स who are not joined anywhere, या कहीं पर ज्वाइन नहीं किया और नीड हेल्प इन फिलिंग अप द फॉर्म्स, तो ये वीडियो को देखिए एंड नो रेफर कीजिए एंड एक्चुअली हेल्प कीजिए उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया एंड दे एक्चुअली वांट टू फिल अप द फॉर्म। ऑलराइट, सो विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोस एज वेल। जो भी और यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, IIM इंदौर भी अभी येट टू रिलीज देयर एप्लीकेशन फॉर्म, एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं एंड उनकी वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ प्रथम टेस्ट प्रेप। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट वेन एवर वी क्रिएट एनी वीडियोज़ देयर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म फिलिंग वीडियोज़ के अलावा देर आर फ्यू मोर वीडियोज़ जो हम लोग अपलोड करते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स, नॉट आवर स्टूडेंट्स, सबके लिए हम लोग अपलोड करते हैं। सो देर आर फ्यू क्लासेस फॉर लीगल करंट अफेयर्स, जो स्टूडेंट्स लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लीगल करंट अफेयर्स क्लासेस चलती हैं। दोस्त हु हैव जॉइंड एनीवेयर एल्स ऑल्सो, यूजर मटेरियल वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दीज थिंग्स। एटलीस्ट आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस होते हैं, वोकैबुलरी की कुछ क्लासेस होती हैं, वी हैव सम करंट अफेयर्स सेशंस गोइंग ऑन ऑनलाइन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, you'll get to know what all videos we have. Take our help in actually doing good in the entrance test. Okay, so that's it. This is how we fill up the form. If in case any kind of help you need, you have the contact numbers on the left hand side, and catch you on the left in the next video. Thank you and have a nice day.